morning everyone. Welcome back to the online class. As you know that we are going through direct and indirect speech, right? So here we have seen what is direct speech, what is indirect speech, and so on. We had seen the rules for changing it. We have also seen some special rule for changing direct to indirect speech, that changes of person we have to keep in mind. We have to keep in mind with the changes of tenses. Okay, so we have seen only how and when we have to change from the tenses. Okay, so as I have told you to study this, that simple present will change into simple past, present continuous will change into past continuous, present perfect will change into past perfect, present perfect continuous will change into past perfect continuous, and so on. You have to study this. Okay, and after when you will study this, you will get a clear cut answer when you will solve the questions. Okay, let's see. With an example, I'll tell you everything. Okay, he said to me, I am your friend. Now just keep in your mind that when the tenses are changed, what the things you have to do in the answer. So he as a subject said is a reporting verb which is in past tense. Okay, ये reporting verb ही आपका पूरा चीज़ चेंज कर देगा. जैसे अगर पहले में हम लोग सेज बोल रहे थे तो वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन अभी सेड हो गया है. तो सेड होने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा में, उसका जो वर्ब होगा वो वर्ब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा इस बेसिस पे. गॉट इट? इस बेसिस पे उसका जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा. तो चलो लेट्स डू दिस. ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड. तो सेड है, पास्ट है, तो आप क्या यूज़ करोगे? टेल्स या टोल्ड, क्या यूज़ करोगे? विल यूज टोल्ड, राइट. ही टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज़ करना है? दैट. यस. अब ये आई है फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो आई की जगह पे ही होगा. अब ये एम है, यही एम क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट इफ द मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट में है ना एम, तो वो क्या में बदलेगा? सिंपल पास्ट में बदलेगा. किस चीज़ में बदलेगा? सिंपल पास्ट में. तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वॉज माई फ्रेंड. वो योर की जगह पे योर एज अ सेकेंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट. और मी वो तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसका, आई होगा सब्जेक्टिव फॉर्म उसका, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो माई होगा. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड माई हियर. ओके, let's go for the another example which will give you a clear idea about this tenses, changes of tense. He said to me, you are my friend. So again you can see said is in reporting verb which is in past tense. Okay, ये past tense की वजह से आपके जो inverted comma में जो भी verb होगा जिस भी sentence में, वहाँ का वो अपने आप चेंज हो जाएगा इस बेसिस पे. आपको ये किसी भी तरह से स्टडी करना होगा. Okay, after this you can be able to solve the questions properly for changing the tense. Let's try. He said to me, you are my friend. What can be the answer? He told me that you will change according to me, तो वो I हो जाएगा. I R की जगह पे क्या हो जाएगा? Simple past will change into simple present will change into simple past. तो you की जगह पे I was my, वो फर्स्ट पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो माई हो जाएगा हिज फ्रेंड. ठीक है, आंसर ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड. नेक्स्ट विल मूव to the next question is that she said to me I am his sister. Again said is in reporting verb which is in the past tense, and now you have to change am की जगह पे क्या होगा? was. वैसे करके सारे में आपको चेंज करने होंगे, नॉट ओनली द वॉज और द सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट.
You have to change all the things, means like past perfect, present perfect, ये सारे can, may, might, ये सारी चीज़ बदलेंगे. For example, you can see he said to me, I shall help you. तो भी देखो told हो जाएगा उसका रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट दिया हुआ है, it will be told. And वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के लिए we will use the that, and shall के लिए we will use should. ओके, वहाँ पे मैंने गलती से would लिख दिया है, बट देयर द आंसर विल बी should. ओके, तो shall है तो should होगा, will है तो would होगा, है ना. तो may है तो might होगा. ओके, सो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी. तो ये सेड है वो पास्ट टेंस में, एंड दैट्स व्हाई इट विल इन्फ्लुएंस, वो शैल को भी इन्फ्लुएंस करेगा और उसका फॉर्म चेंज कर देगा. नेक्स्ट, रोमा सेड टू हरी, यू कैन नॉट हेल्प मी. सो आंसर इज रिटन, रोमा टोल्ड हरी दैट ही कुड नॉट हेल्प हर. कैन नॉट की जगह पे हम लोग क्या यूज किए, कुड नॉट. ओके, now here one exceptions given, like which is means beyond the rules, वो rule को follow नहीं करेगा, like changing in tense, because when the sentence in inverted comma will be a universal truth, then its tense will not change. Yes, universal truth का मतलब वो प्रकृति से बना हुआ चीज़ जो फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं होगा. लाइक द टीचर सेड the earth goes round the sun. It is a universal fact, universal truth which cannot be changed by time, by year, by era, by ACDC. जो भी ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना. It will remain same. तो universal truth के लिए we will never change the verb which is in inverted comma in the sentence. Okay, like the teacher said, ठीक है, दैट द अर्थ गोज राउंड द सन. अभी यहाँ पे मैंने टोल्ड नहीं किया, इसका भी एक रीज़न है. बिकॉज जब आप जिसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है रिपोर्टिंग सेंटेंसेस में जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, तो वो अंडरस्टूड रहता है. टीचर किससे पूछ रही है, टीचर किसको बोल रही है ना. द टीचर सेड स्टूडेंट्स दैट द अर्थ गोज राउंड, वो अंडरस्टूड होता है. एंड दैट्स वाई अगर वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सेड को सेड लिखोगे, सेज को सेल लिखोगे, से को से लिखोगे, ठीक है. लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट होगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू टेल, टोल्ड, टेल्स. ओके, so two things we have learned up to now, that is change in person and change in tense, right. Change in person के लिए you have to study this. Okay, well, you have to study, and for changing in tense you have to study this. Okay, after completing this we can go through in change in other parts of speech, which is next very important. that ये थोड़ा सा easy भी है आप लोगों के लिए for to remind that change in other parts of speech than the change in person and change in tense. So here you can see this will change into that. अगर डायरेक्ट में यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में दिस प्लेस, तो इट विल बिकम दैट प्लेस, है ना. दीज मैंगोज, दोज मैंगोज, कम हेयर, कम देयर, hence, thence. Okay, now then it will automatic change. yesterday का क्या होगा, tomorrow का क्या होगा, a year ago का क्या होगा, ये सारा you have to study by heart. Okay, so don't forget to leave this. For example, I'll say she said I am glad to be here this evening. So underline जितने भी है वो सारे change हो जाएंगे ना. She said that she was glad to be here का there होगा और this का that हो जाएगा, ठीक है. सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए बहुत चीज़ों का बात ध्यान रखना पड़ता है. सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. देयर आर मोर विच यू हैव टू स्टडी वेल. सेकेंड, शी सेड आई सॉ हिम द डे बिफोर येस्टरडे. अभी डे बिफोर येस्टरडे का क्या होगा, लुक अप.
in 2 days time, है ना. तो she said that she had seen 2 days before, है ना. 2 days before means day before yesterday. Okay. Now here you have to remember some more rules, which is really next important, right? Okay, let's see. Given questions in indirect speech, अभी questions रहेंगे indirect speech में, how will deal with that, how will frame the sentence, how will convert direct to indirect speech in that situation. So let's see. When questions are reported, they retain their meaning but lose their form. In other words, the interrogative sentence in direct speech changes to declarative in reported speech. Okay, इसका मतलब ये है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहेगा इन अ क्वेश्चन इन अ डायरेक्ट स्पीच, तो वो ऑटोमेटिक जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इट विल बिकम अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, द सिंपल सेंटेंस, द नॉर्मल वन. ओके, तो we can say, example, can you answer all the questions she said to me? She said to me, can you answer all the questions? It doesn't matter जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो दिया हुआ सेंटेंस होता है वो कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ओके, उसका मेन पॉइंट कन्वे हो जाता है. सो दैट्स वाई वी कैन यूज़ एनीवेयर एट द बिगनिंग और एट द लास्ट ऑफ द रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंसेस. ओके, सो इंट्रोगेटिव में रहेगा तो उसको डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट कर देगा. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आएंगे, इट विल ऑल गेट क्लियर व्हेन आई विल गिव यू लाइक the exercise, the assignments, and then after it will get clear for you. Okay, now example, can you answer all the questions she said to me? The answer will be, she asked me if I could. Okay, now I can. Okay, let's move and I'll clear it later. I could answer all the questions. So here you have seen two changes are done, like asked and if. Okay, asked and if. So क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन ज़रूर किसी से हम लोग पूछ रहे होंगे, है ना. तो व्हेन वी आस्क समथिंग वी यूज़ आस्क्ड. ठीक है, एंड इट इज़ इन पास्ट टेंस, वहाँ सेड लिखा हुआ है, दैट्स वाई टोल्ड की जगह पे वी यूज्ड आस्क्ड. ऐसे फर्दर चेंजेस आपको दिखेंगे. लेट्स सी दैट ऑल द क्वेश्चंस. ओके, तो दिस वी हैव टू यूज, एंड जब भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं वी डोंट यूज दैट, वी यूज इफ और वेदर. ठीक है, गॉट इट. ओके, I will ask this all the things on MS Team. Notice the following in this transformation. There is no question mark in a reported question. There is a full stop. Yes. You can see it later. Let's see. The reporting verb asked is used to show that the statement is a question. अदर सच रिपोर्टिंग वर्ब्स आर इंक्वायर और डिमांड. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, वहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए ऊपर में, है ना, उसमें क्या हुआ है कि क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज़ नहीं किए क्योंकि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया है ना. एंड इट ऑल्सो शोज, जैसे हम लोग आस्क यूज़ किए तो उससे ये क्लियर हो गया कि किसी ने कुछ पूछा है ना. एंड दैट्स वाई वी यूज्ड आस्क्ड देयर. और उसे पता चल गया कि किसी ने कुछ पूछा है, और क्या पूछा है, तो ये पूछा है कि आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, not only the verb tense but also the sequence of the subject and the verb in direct questions is reversed in the reported speech question I could. जैसे कैन यू की जगह आई कुड हो गया. आप लोग को पता है क्वेश्चन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. विल यू, तो यू विल हो जाता है ना. कैन यू, तो यू कैन हो जाएगा, मीन्स आई कुड हो गया. तो उसी तरह से ये ध्यान रखना है क्वेश्चन से जब हम लोग लाइक इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं. तो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू मेंशन. लाइक फर्स्ट,
इफ़ लगाना है दैट की जगह पे, आस्क्ड लगाना है टोल्ड की जगह पे, एंड अगर क्वेश्चन में कैन यू, विल यू, आर यू, एम आई ऐसा कुछ रहेगा तो उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब और जो भी वर्ब होगा कैन, विल, मे या जो भी रहेगा, इज, आर, एम, वो सारे सब्जेक्ट के बाद आएंगे. लाइक कैन यू विल बिकम यू कैन, विल आई बिकम आई विल, ऐसे. ठीक है. Now it comes about the WH questions. The WH word is repeated and it is followed by the subject. The verb comes at the end. So, okay. It is given here example like WH word रहेगा तो वो repeat हो जाएगा and it will be followed by the subject और followed हो जाएगा किससे? Subject के through वो follow हो जाएगा. जैसे देखो, where are all my papers? Okay, said Hari to Arun. Hari से अरुण ने बोला that where are all my papers? What Hari asked, तो उसमें लिखना है ना कि हरी ने पूछा है अरुण से कि उसका पेपर सब कहाँ है. एंड वी विल यूज नथिंग लाइक दैट, इफ कुछ भी यूज नहीं करेंगे. वो वेयर इटसेल्फ विल बिकम अ joining sentences, a word which will join two sentences. Okay, so Hari asked Arun where all his question papers were. Okay, got it? Okay, fine. I just want you to like इतना आप अच्छे से एक बार memorize करो and later I'll clear you all the rest of the I think points and will clear you later. Okay, so up to now I'll give you this PDF and please open and study these three things like change in person, change in tense and change in other parts of speech, which is really important for changing a direct to indirect speech. So guys, completely study this by heart and it will help you to change from a direct to indirect speech. So guys, have a nice day to all and bye everyone. We'll meet you in the next session of this chapter and that will be the last one.